Jai Jirendra Arnav, Jai Jinendra. can you turn on your camera, please? Okay, so we can start a Pathshala by reciting a Namokar mantra. Okay. Namo Arihantanam, Namo Sitanam, Namo Ayariyanam, Namo Vachayanam, Namo Lohe Sahunam, Eso Panchanamukaro, Sava Pavapanasanam. Manglanancha Savesim Parvam Havai Mangalam. Okay. So do you remember what we learned last week? We learned another phrase, Teen Lok Ka Naksha. We studied that. Mm-hmm. I think that's all we did. We did the two lines and then Teen Lok Ka Naksha. We studied it. अच्छा, ओके। तो मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन, तो तुम मुझे बोलना कहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है? So anyway, we'll be reciting Manglacharan. ओके, चलो सभी साथ में। तीन भुवन में सार, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, ज्ञानता शिव शिव स्वरूप स्वरूप शिव शिवकार, त्रयोग त्रियोग संहारिके। सो हमने ये सभी कुछ, हमने वितराग किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, ये हमने सब कुछ कर लिया, राइट? शिव स्वरूप किसे कहते हैं, तीन योग, मन वचन और काय योग, और ये दिस इज द वे हाउ वी कैन अचीव अ गोल, राइट? इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, दिस इज द वे। सो हमने ये सब कुछ कर लिया कि जन्म मरण कैसे, हाउ इज इट इज बीन रिलेटेड, राइट? सो वी डिड इट। ओके, ये भी कर लिया था लास्ट क्लास। ये भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया। ओके, हाँ, हाँ हाँ। तो इसके अंदर जो इधर ये नहीं किया। हाँ, ये नहीं किया, राइट? हाँ। तो अभी हम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेंजा है, डू यू नो सेकंड स्टेंजा, और मैं रीड करूं? मैं रीड कर सकता हूँ। हाँ हाँ, करो। ताई सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद प्रियो आनंदी, भूल आपको भरमत वादी। वेरी गुड। ताहि सुनो पवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको परमतवादी। ओके, तो ताही, लेट्स विल जस्ट go by the words first, and then after we'll start a principle. Manit, can you also turn on your camera as well? Very good, Manit.
तो मनी ताही का मतलब पता है क्या होता है? नहीं, ताही यानी कि ते। वो वाली बात सुनो। कौन सी वाली? जो हमने पहले कही थी। ओके, वो वाली बात सुनो। ताही सुनो, भवी मन थिर आन। राइट, उसको सुनो। जो हम, या तो अभी हम जो कहेंगे, अब इसको सुनो। ओके, आप कैसे हो? तो भवी मन थिर आन। ये भवी के दो मतलब होते हैं। एक मतलब ये होता है कि अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ना, इन फ्यूचर वन, राइट? तो इन फ्यूचर वन, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको कैसे सुनना है? मन को स्थिर करके। आन मीन्स आना। समझ गए? कि भाई हाँ, अब मैं जो कहने वाला हूँ तो उसको मन को स्थिर करके, अपने विचार कहीं पे भी नहीं जाने चाहिए। Why they say this one? Do you know? एक गोल पे आपको फोकस रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। Yes, we suppose has to be focused, not distracted. Because many times here that means we are sitting here, right? But with our mind, we can be anywhere. Sometimes, it means we are just in a school, sometimes in outside, sometimes in a vacation, sometimes in another planet. We don't know. But physically, you are here. Mentally, not. So they says no. If please be focused. Why we want to make a focus? ओके, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे क्यों फोकस करना है? तो जो चाहो अपनो कल्याण। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, व्हाट डू मीन बाय कल्याण? अ, मुक्ति। मुक्ति, अपना वेल, अपनी अच्छाई, राइट? अपने लिए कुछ अच्छा चाहते हो, अपने लिए कुछ भला चाहते हो। सो दैट इज द कल्याण। तो एक तो ये, यहाँ पे भवि का मतलब, एक हमने क्या कहा कि अब मैं जो कहूंगा इन अ फ्यूचर वन, सो पे अटेंशन। ओके, योर टोटल फोकस। और दूसरा भवि का मतलब क्या होता है पता है? भव्य जीव। हे भव्य जीव, आप अपने मन को स्थिर करके सुनो। प्लीज पे फुल अटेंशन, प्लीज हैव a focus, प्लीज हैव a concentration. ओके, सो कौन? भव्य जीव। सो व्हाट डू यू मीन बाय भव्य? So there are total, प्रेजेंट टेंस। नहीं, भव्य का मतलब, भव्य, हाँ। ओके, हाँ। So there, okay, so भव्य is like an qualification. Okay, जैसे मैं आपको बोलूं एग्जाम्पल पे कि राइट, इफ यू आर गोइंग इन समवेयर, तो वहां पे बोलेंगे कि भाई हु, ओके, इफ यू आर गोइंग इन सम ऑफ दैट द मीटिंग, तो वो खड़े होके बोलेंगे कि हु आर द डॉक्टर्स, प्लीज स्टैंड ऑन दिस साइड, हु इज इंजीनियर ऑन दिस साइड। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आप इंसान नहीं हो? नहीं हो, बट यू आर नॉट। इफ यू आर डॉक्टर, then stand with this the in a doctor's queue or doctor's group. Okay, if you are engineer, then stand with this the engineers group or something. Correct? The doctor, engineer, what is that one? एक क्या था क्वेश्चन, सॉरी। So what is the doctor, engineer, okay, or architect? What is that things? They're just they're still humans, but they have different jobs. It means that that is their qualification, right? Their Yes. degree, their qualification. You तो भाभी, understand? तो भाभी। So bhavi, bhavyata is also a qualifications. So what is that kind of the qualifications? So there is okay, only bhavya jeev can go in a moksha. Who can go in a moksha? Only bhavya jeev. Means okay, if you are qualified for those the bhavyata, yes, you can go moksha. If you are not a bhavya one, you cannot go moksha.
ओके मनी, इजी वे में अंडरस्टैंड में आ गया? Simple. Okay. If I'll put it up in another example, right? Have you ever traveled in an aeroplane, Manit? Yes, right? So where you went last time? India. India, right? So you traveled India. So you know that means there are many passengers in an airport, correct? So did everyone fly with you? No. No, only those passenger who has a ticket of your plane, they just flew with you, right? Correct? Yes or no? So what is that? The ticket. Yes. Ticket is a qualification. Okay. If you have a ticket of this aeroplane, then and then you can travel into this aeroplane. If you don't have a ticket, yes, you are passenger. We understand. But sir, this is not your plan, right? Immediately that the attendants or whoever is at the gate, they tell you, correct? You समझ में आ रहा है यार? नो, आप जाके बोलोगे कि मेरे पास तो प्लेन की टिकट है, तो वो बोलेंगे कि हाँ आपके पास टिकट है, मगर इस प्लेन की नहीं है, ये दूसरी जगह के प्लेन की है. ओके, सो वी विल नॉट अलाउ यू टू बोर्ड इनटू द प्लेन, करेक्ट Manit? Right? So if you have it, so that ticket, it means that is a qualification. You understand? So bhavyata is also a qualification. Okay, so now I have a very quick question. Does all bhavya jiv will go in a moksha? No. No. Yes. May or may not be. Right? Means usually yes, but not all. Okay. Why? पता है क्यों? क्योंकि अभी कितने सारे भव्य जीव है, पर वो अभी निगोद में है. कौन से निगोद में? नित्य निगोद में. निगोद में से बाहर ही नहीं निकले हैं. Okay, Nitya means always been in Nigod. They didn't even get a chance to come outside into this the Tras Paryay. Okay, in a Tras Nadi. They even didn't get a chance to come outside in a Tras Nadi. So yes, they have a bhavyata, they have a qualifications. If they will come out and they put it the right effort into this, the right directions, they will attend a moksha. So तुम्हें पता है? So okay, ऋषभदेव भगवान के 98 सन्स. ऋषभदेव भगवान के सभी जितने भी संत है ना, 100 संत है. कितने ऋषभदेव भगवान के? 100 सन एंड 2 डॉटर. तो 2 डॉटर को आप निकाल दो, 100 के 100 मोक्ष में चले गए. मगर उसमें से 98 कितने? 98 केम फ्रॉम निगोद. वो निगोद में से एक कीड़ा बने, और कीड़ा बन के तुरंत ही ऋषभदेव भगवान के सन बने. ऋषभदेव भगवान कौन थे? तीर्थंकर. उसके सीधे सीधे उसके सन बने, और वो 8 साल के हुए ना, तब तक तो कुछ बोले ही नहीं. नॉट इवन इन सिंगल वर्ड. सो देयर मदर वेर वरीड. ओके, कि वेदर माय सन्स आर दैट डेफ. वो सुन नहीं सकता क्या? क्योंकि अगर वो सुनते तो कुछ ना कुछ तो बोलते. सही है? या तो उसको कान में खराबी है, या तो उसको बोलने में कुछ इश्यू है. ओके, समझ गए कि वो बोल नहीं सकते क्या? नो, दे वेर, because they do not have a purva sanskar, means they do not have that the memories from the past. Why they do not have a memory for those the linguistic memory? Because they never been into that kind of the pariyai. What do you mean by pariyai? We already learned.
Manit, what do you mean by paryay? Kian, can you turn on your camera? But And always keep your camera on. Okay. What is the paryay? Can you unmute yourself? the paryay is the paryay is the reason of unhappiness. No. Why we the paryay is I don't know. The paryay is how to Okay, Arnav and Manit. You know that we are learning our Can I- genealogy, right? So we each Can that I one get has some terminology, and we also need to learn a terminology as well. So what is the paryay? Yes or no? Can I go drink water? Yeah, you can go and drink your water, not a problem. Manit, what do you mean by paryay? Do you know? So paryay is right now in which paryay? Paryay is called avastha. It means that right now in a which form you are. So you are right now which form? Human being, right? Or you are animal, or you are a heaven being, or you are hell being. Which one you are? Manit, unmute yourself. human being. Human being, very good. So that your shape, your human shape, it's called a paryay. Okay. So right now your shape, your appearance, okay, whatever you are at the present moment, it's also called a paryay. I can't hear you. Now you're audible. Now, okay, just give me a second. How about now? Are you able to hear my voice? Right, Mani? So you understand what do you mean by paryay? Paryay, okay. So here one in a paryay is like, and you can simply understand as your birth, as you born as right now you born as a human, so human. But if in a next life, if you born as a dev, then what is your paryay in next life? Manit? Mm-hmm. So if you in the next life, if you born as a dev, then your paryay is a dev paryay. And Kian, if you born as a rabbit in your next birth, then what is your paryay? Rabbit paryay. Yes. Okay. So it means that what's the shape you are, okay, how you are in. So that is called paryay. So let Arnav come, and then we can complete that the story, and we are going into this the next one. Did Kahoot. a Kahoot? I will see, okay, if we can. Just let me try to open. Meanwhile, Arnab is coming up there. Let me try out for those the Kahoot. So anyway, that we'll try it little bit later, but let's first finish this the conceptual, otherwise we will miss it. Okay, so this one is Bhavyata, you understand. Then after this is Moha, Maha, Mad, Piyo, Anadi.
ओके, सो यहाँ पे सिंस हाउ लॉन्ग यू आर ड्रिंकिंग अप दैट वन? अनादिकाल से। ओके, सो हम जो बात कर रहे थे ना ऋषभदेव भगवान के सन की, तो उसने पीछे कभी भी वो 4 5 इंद्रिय हुए ही नहीं थे इन प्रीवियस लाइफ। ओके, so they do not have any ability for those kind of the language। तो उसका संस्कार नहीं था, उसने कभी लैंग्वेज लर्न ही पास्ट बर्थ में नहीं की थी। So they don't know what is the language। And then what happened, they are around 8 9 10 years old, all that become up there। और ऋषभदेव भगवान का क्या हुआ, समवसरण लगा। ओके, ऋषभदेव भगवान गोटे केवल ज्ञान, तो उसका समवसरण लगा। तो सभी लोग समवसरण में गए और ये भी गए समवसरण में, और इसके साथ इनकी मम्मी भी गई। तो इनकी मम्मी ऋषभदेव भगवान की क्या हुई, व्हाट इज द रिलेशंस? अर्नब, जो 98 सन्स थे उनकी मम्मी का ऋषभदेव भगवान से क्या रिलेशन है? कियान, अनम्यूट योरसेल्फ। It is the relationship with his mom, that या, they're her son. ऋषभदेव भगवान रिलेशंस विद those are the 98 sons mom। Oh, grandson. Now Son? relation with ऋषभदेव भगवान। Okay, Oh, that the sons, grandfather. that sons the mom, what? Okay, जो उसकी मम्मी थी सभी बच्चों की, उसका ऋषभदेव भगवान से क्या रिलेशन है? Uh, अर्नव, मानी। ओके, वो किसके बेटे थे? 98 जो सन आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, वो किसके बेटे थे? मैं ये क्यों पूछता हूँ पता है? कि मैं आई ट्राई टू सी कि हाउ मच यू आर पेइंग अटेंशन। यहाँ पे लिखा है ना, मन थीर आन। अभी हम लर्न कर रहे हैं, वी नीड टू फोकस, राइट? सो वेर आर यू गोइंग टू फोकस इट? ऑन जस्ट ऑन अ स्क्रीन? वेर आर यू डूइंग अ फोकस? आर यू लिसनिंग इट? ता ही सुनो भवी मन थीर आन। Are you listening with the full concentrations? Then you supposed to know what we are talking about it. Kian, keep your camera on all the time. ओके, तो वो ऋषभदेव भगवान की वाइफ थी, क्योंकि ऋषभदेव भगवान के बेटे थे सारे। ओके, आपकी मम्मी का आपके पापा से क्या रिलेशन है? मनीत? यस और नो? Wife, right? Very. या, हस्बैंड वाइफ का, राइट? सही। ओके, सो दैट्स वे दैट इज, यू नो दैट वो तो ऋषभदेव भगवान के बेटे थे। तो वो वहां पे जाके उसने क्या सुना? भगवान का सरमन सुना। ओके, एंड दे इमीडिएटली, यू नो दैट, दे गॉट सम्यक दर्शन। सुनते ही उसने क्या कर लिया, अनुभव कर लिया। और फिर क्या बोले पता है? हे भगवान, हमको भी चिन्वर दीक्षा की आज्ञा दो, हम मुनि बनना चाहते हैं। सीधा वही बोला। एंड दे बिकम अ monk, और वो उसी भव से मोक्ष में चले गए। तो वो तो वहां से 98 तो उसमें थे ही, समोसरण में। ओके, उसमें से 98 में से कुछ तो भगवान के गणधर बने।
ऋषभ देव भगवान के बेटे का नाम ऋषभ सेन था, वो भी भगवान के बेटे थे। ओके, और वो गणधर भी थे। तो ऋषभ देव भगवान के कितने गणधर थे? किसी को 12? पता है? 12? नो, नो, 84। ओके, 84 गणधर थे, 84। तो अभी हम वही कह रहे थे, तो इसलिए वो निगोद से आए थे, राइट? सो बिकॉज ऑफ दोज आर द भवी, मीन्स दे हैव a qualifications, they can go to this the मोक्ष। सो भवी का मतलब होता है कि भव्य जीव, और भवी का मतलब हमने दूसरा भी किया कि इफ यू इन अ फ्यूचर, if you want to that wish your wellness, okay, then listen it now. So first listen it, and then what is the next step? Avika, Oh, what what will was be the the next question? step? What was the question? If you want to do, my question है कि अगर अपना अच्छा करना चाहते हो, यहाँ पे तो ये बोला कि अभी आप सुनो। Okay, You're cutting. so first you lead, and Your, then after, what is the next step? your voice is cutting. My voice is cutting. Okay, And let me repeat it. Okay, so my question is, यहाँ पे ओके, नाउ लेट्स विल गो टू द भवी मन थिरान जो चाहो अपनो कल्याण। तो यहाँ पे तो ये बोला कि पहले सुनो, अब टोटली कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करके, पे फुल फोकस, पे फुल अटेंशन, राइट? जस्ट लिसन इट फर्स्ट। So they will say, okay, first you listen it, and then what is the second step? listen and understand. Listen and understand, right? So that is the first step. Then what is the second step? Okay, I think I also need to explain, right? So I'll just Apply. give another example. I will. Hmm? हाँ, no, बोलो. So what is the second step? Never mind. You know that? Okay, I'll just. No. Whatever it is, that's fine. This one is the open, right? We can easily discuss Okay. and we can easily talk. Okay. So I'll just give an example. Then after I will ask you. Yes. So let me give you an example, and then after I will ask this the question again, because then we are here to understand it. Okay. And then after we are going for those principles. So if I will say, hey Mani, can you bring me a glass of water? Mani, Yes. can you give me a glass of water? Yes. Can you give me a glass of water? Did you listen it? Yes. Okay, then where is the water? I can't give the water through the screen. Okay. So is the next step to No browse? problem. So what is the next step? Now अर्नब समझ गया क्या है नेक्स्ट स्टेप? कि मैं बोला तो मनीष ने कहा कि हाँ मैंने सुना। उसने कुछ एक्शन लिया कि अर्नब, मनीष ने कुछ एक्शन लिया? No, right, Mani? Define. If you're just listening it, yeah, if you're just listening and don't not take any action, will it help you?
No, you have to take action. Yes. Okay. So that is why they say, okay, pay attention, first listen, and after listen, do not be just stopped at the listening. Whatever you listen, you need to put it in a practice as well. Correct? Right? So they says, okay, so before we'll go further one, I want you to be, whatever you are doing, any activities, I want you to be just refrain from it or stop it. Okay, first you stop it, and then after we'll start another activity. Correct? And it's the very normal process, right? Right now, for an example, if you are, okay, somebody say, okay, I'll just give an example. Arnav is right now in a Parshala class, and suddenly you know that Arnav's Papaji called him and say, "Hey, Arnav, can you give me these things?" Example, right? So what Arnav is doing? Arnav, first, whatever he's doing in a Parshala class, he's just stopped But that activity. Correct? yes, Right? You first stop this the activity, and then after you pick up the another activity and you do. Right or wrong? Mani समझ में आया क्या? Correct? Right? Okay. Mm-hmm. Avika, can you give me an example? Avika, are you there? Avika? Yes, very good. So do you understand a concept, right? So can you give me an example? There are So millions, trillions. Mm-hmm. Okay, someone's let's. sitting in someone is doing a dance class. Like I'm in dance class, and then my parents just got home, so they called me to help them with the groceries. Okay, very good. So you know that means what it is. If I'll just put it in a very simple language. I know Avika, you understand it, right? So for example, Avika is dancing, right? And suddenly and parents say, "Hey, Avika, can you come to help me out into this matter?" So what Avika will do? Avika was dancing. So first she just stopped doing a dancing, right? So she's stopping that the activity, correct? And then after she is going to pick up another activity, right, Avika? You understand, right? The process one. So that is what they says. What here they says, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको परमतवादी. So सबसे पहले आप जो मोह रूपी महामद, मद means नशा, okay, tranquilliness, nasha. You know that means whenever is the people are drinking too much of liquor, what they are doing? They're tranquil, right? They are not into their mind. So मोह रूपी महा नशा जो आप कर रहे हो ना, उसको मोह महामद पियो अनादि, जो अनादि काल से पी रहे हो, अनादि मीन्स टिल नाउ यू आर स्टिल ड्रिंकिंग, मोह रूपी दारू को, ओके, उसको पहले स्टॉप करो, मत पियो अनादि, राइट? मोह महामद पियो अनादि. समझ गए? सो अभी जो तुम कर रहे हो ना, उसको पहले स्टॉप करो. क्यों स्टॉप करो? तो यहाँ पे एक एक्शन दे रहे हैं और फिर रीजन दे रहे हैं. यहाँ पे एक एक्शन दिया, ओके, और फिर रीजन दिया. यू अंडरस्टैंड? दिस इज अ स्टाइल. ओके, तो रीजन क्या दिया? भूल आपको भरमतवादी, मीन्स भूल, भूल जाना, फॉरगेट इट. ओके, किसको भूल गया? अपने आप को, मीन्स यू. Okay, have you seen up that one who are in highly
इंटॉक्सिनेशंस वंस, ओके। और किसने अगर बहुत ही ज्यादा दारू पी ली है तो उनको उनको कुछ अपना नाम पता भी याद रहता है क्या? आप पूछोगे कौन हो तुम, पता नहीं मैं नहीं, कौन हूँ। वो होश में नहीं रहेंगे। हाँ, तो यहाँ पे ये अभी ये होश में ही नहीं है, तो इसलिए वो अपने आप को भी भूल गया है। भूल आपको भ्रमतवादी। भ्रमत, भ्रमत मीन्स भ्रमण करना, मीन्स घूमना, कहीं पे भी वो चला जाता है और कुछ भी बोलता रहता है। जिसने काफी स्ट्रांग दारू पिया हुआ है और नशे में है, तो वो तो कहीं पे भी इधर उधर घूमेगा और कुछ भी बोलेगा, राइट? मीन्स डू दे हैव एनी सेंस? नो सेंस, राइट? सो व्हाट इज their first says, please stop a liquor kind of the strong one, that is which one? मोहरूपी। ओके, उसको, जो अभी तुम पीते आ रहे हो ना, उसको स्टॉप करो। क्यों स्टॉप करो? क्योंकि वो तुम पी रहे थे तो तुम किसको भूल गए थे? पहले तुम कौन हो, अपने आप को तो पहचानो। तुम मुझसे सीखने आए हो तो मैं पूछूंगा ना कि आपका नाम क्या है, तो अर्णव बोलेगा कि आई डोंट नो माई नेम। हु आर यू? आई डोंट नो। ओके, वेयर डू यू लिव? आई डोंट नो। इफ द ऑल आंसर्स आई डोंट नो, देन व्हाट आई विल से? ओके, फर्स्ट find out who you are, right? Because I want to write down your name in a register. I want to, okay, if I want you to call something, what I will say, hey, Mr. Nobody, can you come here, like that way? No, what is your name? First you need to find out, right? Correct? तभी तो तुम है, तुम ये कर रहे हो, दूसरा क्या हम कर, उसी के हिसाब से तुम घूमते रहे हो कहीं पे भी। तो ये बोल रहे कि हाँ, अब तो घूमना भी नहीं, अब तो यहाँ पे स्टेडी रहना। बिकॉज तुम कहीं पे भी घूमोगे, इफ यू आर वंडरिंग अराउंड वन, राइट, एंड दैट वे कैन यू क्रिएट एनी फोकस? No, right? If you want to concentrate, concentrations on one thing, on what you calm down, you become a more steady, right? You become a still, and then you can concentrate. Correct? Right, Avika? Or you are just jumping around and then you will say, hey, I'm concentrating. Is that possible? Yes, no? You have to concentrate on one thing. Yeah, then you cannot. If you are keep jumping, if you are doing keep other activities, you cannot be concentrating it, right? So that is the two things. So we'll find out why they says now you do not have to be intoxicated with more. So what do you mean by more? More means delusion. Okay, मोह का मतलब है कि जो दिखता है वो नहीं है। समझ गए? It's like a that illusion. It's like a delusion. Okay, it's like your belief. I will just give an example. How many of you have seen a ghost? Manit, आपने घोस्ट देखा है? नहीं। अविका? नहीं, right? But do you believe in a ghost? You don't believe, right? Or if suddenly it will be appear, then do you know ghost exist? पता है? That's an illusion. Ghost exists. No, it's a fact. नहीं, and आत्मा, हाँ। भूत होते हैं, आत्मा नहीं। मैं भूत की बात कर रहा हूँ, घोस्ट की। आत्मा तो होती ही है, पर मैं भूत की बात करता हूँ। आपने कभी नहीं देखा क्या? रोज ने देखा है टीवी शोज और टीवी शोज में, जैसा टीवी शोज में देखा है ना, ऐसी नहीं होते। ओके, पर होते हैं। तो इनका इनसे है कि भी हाँ, अगर आपने बोला कि हाँ, मैं मैंने भूत को देखा नहीं पर मैं बिलीव करता हूँ कि भूत होते हैं, तो उसको इल्यूजन कहते हैं। कि भी हाँ, आपने देखा भी नहीं पर आप बिलीव करते हो, वो जो सही चीज नहीं है।
जैसे you looking a ghost like a ghost one, however you are looking in a movies one, ghost is not like that way. Okay, भूत ऐसा नहीं होते. भूत तो हम जो है ना, हमसे भी काफी खूबसूरत होते हैं. वो ऐसे डरावने वरावने कुछ नहीं होते. They are not like a very horrified one, okay, or they do not have those are the distorted face and nothing up like that one. They are really very beautiful than us आपको कैसे पता? because it's written in a scripture. Okay, so there are 10 types of Vyantardevs. How many types of? 10 types of Vyantardev. Bhoot, Pishach, Danav, all those are the types of Vyantardev. 10 types of that one. And all devs are really beautiful than us. Okay, and that's how you know that in sometimes we can say majority, okay, means yeah, we can say 99.99% they are much more beautiful than us. Okay, sometimes you know that means we may be or 1% on earth may be more beautiful than that one. Or if you know that they will say, hey, or somebody ask a question, hey, does in a human world is there anyone is more charming, more handsome, more beautiful than us? And then if the answer comes yes, then they will come to just particularly see that one if they have the questions comes up there. Okay, but yes, our Tirthankar Bhagwans is the most astonishing and handsome than anyone else, including Indra. Our Tirthankar Bhagwan सबसे खूबसूरत होता है. Okay, but yes, so these are like an exceptions, right? It is not in a general, but whenever we are talking about in a general sense, they are more handsome, more beautiful than us. All right, so what is the more? What is the more? More means which one is not yours and you believe it is yours. I'll just give an example. Correct? For an example, right now, Avika wearing a really nice jacket. So Avika, that jacket is yours? Do you believe that that jacket is yours? Not my soul's, it's my body's for this birth. Even that jacket is for your body's has that jacket? It is there your body's jacket? Yes, no. No. No, yes. Okay, Arnav, जो Avika ने jacket पहनाया, does that the jacket is belongs to Avika? Yes or no? Yes, obviously. Yes, because she's She wearing it. has it, Yeah, she she has. own it, she wear it, right? Their parents bought it for, or somebody's bought it for her specifically, correct? Right, Avika, it is yours or not? Yes or no? Yes, right? And you also believe that that jacket is yours? Very good. Does that jacket believe that it's belong to Avika? Why then you are just doing a one-sided relation, right? How long this the one-sided relations last? Until my next birth. Ah, that is too much. So you are keeping this jacket until you die? And come on. Actually, How no. Until I grow out of it. yeah. So it means that no, that relations won't last, right? Because you just have a one-sided love. One-sided relations will never last long, correct? Right? So it means that you believe that that is yours. They are not believing that is you, means they belongs to you. So means what is this one? It means that you are in a illusion, correct? Right? आप ही मानते हो, वो तो नहीं मानते. समझ गए ना कि नहीं समझे? समझ गए. समझ गए, right? Yeah. Yeah. Okay, can you give me another example?
I'll give you also another example, right? For an example, right now you are a US citizen, correct? Because you already born in US one. You by birth you are US citizens. But if you are going anywhere outside, do they believe you are a US one? What they will say, hey, you guys are immigrant, correct? Or you are Indian. Hey, I am a US citizen. I am not an Indian, but still they are looking as an Indian, correct? And you also believe that, yeah, we are belongs to Indian, yes, because our ancestor come from that one. So that's how. But whatever is the reason, forget about the reason one. You still believe that you are Indian, correct? That's why you are going in Indian community, right or wrong? Avika, yes, no. Arnav, yes, no. So what is that Yes. thing? So what is that thing? One That way is, relation. yes, one way relation. So wherever is the one way relations is always been illusions, right? So that is the more. You understand, right? Now what is the more? Is like in one way relations. That is just from the one sided one, not reciprocate. Okay. And you are building, okay, that the building is yours, and you say, hey, this is my house. Okay, and after a month, if we'll go and Avika just moved out to the another home and say, hey, Avika, last month you were in a different house and now you're in, yeah, it was our house before we bought this one. We recently bought it and we moved out into another new house. Now this is my house. What about the last month or 6 months back you were talking about? Whether that one is not your house? No, that one was my house. Now we've changed. Does that the house believes that it is belongs to you one? No, one way relation. So that is called more. You understand it, right? What is the more? In a simple and simplest manner one, it means that just you believe that that is yours. They are not believing that they belongs to you. That is called more. Okay? You believe that your parents is yours parent. No, once you grown up, you even don't want to stay with them. When you just move out, okay. So what happened? If you are belongs to them one, you always been staying with them. No, this is not going to be happen. It means that that is illusion. Okay, you understand it, right? And we live in a world of illusion. Yeah, one way, yes, that house is belongs to Avika, which house Avika is living up there, but in another way, and in reality, it is not. Okay, why we are seeing that way? Because the entire world is seeing that way. They say, yep, that house is belongs to Avika. Avika is also believe that house is belongs to me. But if we are going towards the truth, no. Reality, no. That house is belongs to the house only. Neither of Avika or nor for this any new residents or anyone. Right? मनीष समझ में आ रहा है कि अगर कि टफ हो रहा है? मैं मोह को काफी इजी तरीके से समझाना चाहता हूँ, इसलिए समझ में आ गया? व्हाट इज द मोह? मोह मीन्स वन साइडेड लव, हाँ. बिकॉज या सिर्फ तुम ही करते हो, सिर्फ तुम ही बिलीव करते हो, सामने से रेसिप्रोकेट नहीं होता। ओके, और जो सामने से रेसिप्रोकेट नहीं होता उसका रिलेशन भी लंबा नहीं होता। और सामने से कई बार रेसिप्रोकेट होता भी है पर वो झूठा होता है। आई विल गिव अनदर एग्जांपल। ओके, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया तो आप क्या बोलोगे? कि इसे अपना ही घर समझो, बोलोगे ना? हाँ. राइट? हाँ। Yes. हाँ, और वो भी बोलेंगे कि हाँ हाँ जी भैया,
हम इसे अपना ही घर समझेंगे। और अगर वो मान ले कि ये घर उसका है, तो क्या होगा? वन वे रिलेशन हो गया। घर भी नहीं नहीं मान। नहीं 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 नहीं, वन वे कहाँ पे हुआ? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि आपके घर पे कोई आपका फ्रेंड आया एग्जाम्पल पे। ओके, तो आप बोलोगे कि भाई आपका कोई रिलेटिव आया, चलो आप चाचा जी बोल देते हो, चाचा जी आए आपके घर पे। ओके, तो आप वो इंडिया से आए एग्जाम्पल, ओके, और आपके घर पे 4 दिन ठहरने वाले थे, समझ गए? तो वो आए, तो जैसे वो चाचा जी इंडिया से आए आपके घर पे, और आपने क्या बोला कि चाचा जी ये इसे अपना ही घर समझना। ओके अर्नब, और चाचा जी ने भी बोला कि हाँ मैं इसे अपना ही घर समझूंगा। रेसिप्रोकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, राइट? हो रहा है, हाँ। हाँ, आप चाचा जी को बढ़िया सा नाश्ता बना के दे रहे हो, बढ़िया बढ़िया लंच में और डिनर में आइटम्स बना के दे रहे हो, ठीक है, उसको घुमाने भी लेके जा रहे हो। यू गिव देम एन टोटली नाइस हॉस्पिटलिटी, एवरीथिंग लाइक मीन्स यू आर डूइंग प्रिटी नाइस सर्वे। और 4 दिन के बाद चाचा जी अब तो रुक गए। तो आप पूछोगे कि भाई चाचा जी आपका प्रोग्राम क्या है, आप कब वापस इंडिया जा रहे हो? अरे भाई मैं क्यों जाऊंगा इंडिया? आप ही ने तो बोला था कि ये घर किसका है, अ, मेरा है। हाँ, हाँ, मेरे। आपने बोला था ना कि आप ही का घर समझो, तो आप ही ने बोला था कि ये घर तो मेरा है, अब तो मैं अपने घर में रहूंगा। सो उसके बाद क्या होगा? अर्नब, उसके बाद क्या होगा? मनी, अविका, अब बताओ उसके बाद क्या होगा? कियान, हाँ, अब चाचा जी बोले कि हाँ अब तो ये घर मेरा ही है, अब तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तब पर क्या उसका होगा? उसका घर नहीं है ना। जब बोल रहे थे नहीं, कि क्यों नहीं? आपने बोला ना कि ये घर, आपने क्या बोला कि चाचा जी ये आप अपना ही घर समझो, और उसने समझ लिया कि ये घर मेरा है, तो उसके बाद क्या होगा? नहीं, आपका मतलब था जब बोल रहे हो कि आप अपना घर समझ रहे हो, आप बोल रहे थे कि मतलब फील कंफर्टेबल, राइट? अरे आपने जैसे बोला, आपने फील कंफर्टेबल बोला, लेकिन उसने समझ लिया कि ये घर मेरा है। ओके, तो फिर क्या होगा? तो उसने गलत समझ लिया, राइट? ओके, गलत समझ लिया सही समझ लिया वो बाद में, लेकिन सिचुएशंस क्या होगी? फाइट होगी, सही है, राइट? अल्टीमेटली तो लड़ाई होगी ना कि भाई हाँ ये घर आपका नहीं, आप निकलो यहाँ से। आप चाहो तो 4 दिन की जगह पे 1 महीना रहो, ठहरो, हमें कोई इश्यू नहीं है। चाहो तो 6 महीना ठहरो, we do not have any issue, but whenever you believe that this house is belongs to you one, there is a issue, right? सही ना? हाँ, हाँ बस, तो वहां पे रेसिप्रोकेट भी हो रहा है। देखा, आपने बोला तो रेसिप्रोकेट भी हो रहा है। फिर भी इन अ बिलीफ आप भी जानते हो कि आप बोल रहे हो कि चाचा जी इससे अपना ही घर समझो, मगर इन अ बिलीफ डू यू रियली मीन दैट थिंग? आपको पता है कि चाचा जी भी ये अपने इस घर को अपना घर नहीं समझेंगे, और चाचा जी भी बोल रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं अर्नव, ये मैं अपना ही घर समझूंगा। ये बोल भी रहे, आपको रेसिप्रोकेट भी कर रहे हैं, बट इन देयर बिलीफ इज ऑल्सो दैट आई एम अ गेस्ट हियर, राइट? यू अंडरस्टैंड, राइट? फ्रॉम द चाचा जी पॉइंट ऑफ व्यू, चाचा जी भी ऑल्सो सोच रहे, हाँ तो बोला कुछ जाता है, समझा और जाता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ मोह। समझ गए मनी? I have to leave. Anyway, we just have a 2 more minutes, and I Okay. will complete these things up there one, okay? And then after. So now you already understand, right? So more means, okay, what any kind of those that illusions, delusions, okay, that is called more. And how this the more is working?
Mo has a highly control over the which one? Belief system. Right? In everywhere, first one, you are just doing from your side one. In also over there, if you look it in a background, it is your belief. Second one means first one, there was no reciprocations, right? Means there was no response from the other side. But in your belief that you believe that that is belongs to you. And second one, yes, there is a response. But in a belief, that is also whatever you are saying is a contradicting with your belief, correct? जो आप बोल रहे हो इससे contradict भी हो रहा है. So more is entirely depend on which one? Your belief. All right. So that is one. Okay. So let's with this one. Now I'll again just simplify this one and then we can conclude this class. Tahi means okay. Now what I'm going about to tell you. Suno means listen. Bhavi, I already told you, right? So Bhavi has a two meaning. First one is qualifications. You are qualified. If you are a Bhavya Jeev, yes, you're definitely going to means if you try, then you can go. It's you are qualified means if you try, then you can do. But if you will not try, you can always be in sansar. Okay, that's fine. Second one, the second meaning of the Bhavi means in a future. Okay. Manathiran, concentrate with your mind. Okay. Why you want to just listen these things with the concentrations? If you want to wish your well-beingness. Okay, जो चाहो अपनो कल्याण. Moh mahamad piyo anadi. So do not drink a liquor like more. We already learned about that, right? More means delusions, right? And भूल आपको, forget. Whom आपने पिया तो अपने आप किसको भूल गए? You forget yourself. And because you forget yourself, one right now we are just wandering and talking any nonsense things and wandering here and there. Okay, so first stop, listen. And then after this is, then after the next, from the next stanza, that the story will start. Okay. So any questions so far? No? So this class, we are concluding with our traditions, Namokar mantra. So please, everyone, join your hand and let's recite a Namokar mantra all together. Namo Arihantanam, Namo Sitanam, Namo Ayariyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Savasaunam, Eso Panchanamokaro, Sava Pavapanasano, Manglanancha Savesim, Padmam Havai Mangalam. Okay, tomorrow, Saturday, means we have a special class for the calendar. And you already got those invitations, right? So it's a 6 p.m. EST time tomorrow, Saturday, and that is a very special class. Okay, please join. Saturday, 6 p.m. EST, and then you can convert it into your time zone. Okay, see you tomorrow. Jai Bye. Jinendra, Jai bye. Jinendra. Bye.